Good morning, friends. Hope you are fine. Friends, today we are taking the topic, we can say the last topic, right? So let's see, friends, what are the topics that we have learned up to here, right? So first one we have learned the revision. In revision we have learned that is defined banking. That means the bank is an institute which collects the deposit with the intention to invest or lend with a condition to returning it at the end of the fixed term whenever it is demanded, right? Then we have learned the functions of bank. In functions of bank, we have learned two functions. One is the core function and one is the subsidiary function. So in core function, how many points we have learned? The four main points we have learned. What is the first point? To accept, to collect the deposit. Second is to invest. Third is to lend. You can say vice versa. And the fourth is to do interbank transaction. Subsidiary function, what we have learned, the first is to look after the financial transaction of the customer, to do the transaction relating to foreign exchange, to issue letter of credit, to issue traveler's check, to issue draft, to provide service of an underwriter, and to provide the service of ATM, demat, and safe deposit vault. Then we have learned in how many types the saving types of account can be opened. So in the four ways we can open the saving account. Open the account, that is a saving account, current account, recurring account, and the fixed term deposit. Now the question is, what are the services provided by the bank? From here we have to start. Already we have learned the services provided by the bank. The bank provides services to the customers like issue of draft, issue of draft, banker's check, RTGS, NEFT, bank overdraft, cash, credit, loan, etc. Is it clear to you? So what are the services provided by the bank? The bank provides various services like draft is there, banker's check is there, RTGS, NEFT, bank overdraft, cash credit and loan. Then we have learned the concept of e-banking. That is facilities like internet, core banking and mobile banking are included in the e-banking. In e-banking, banking transactions are completed electronic form instead of physical form. In this form, bank transactions are completed through the either internet or mobile phone. Already we have learned this. The core function, that is a centralized online real-time exchange, we have learned. Then we have learned what are the service associated with the bank. The bank provides services like ATM, credit card, debit card to the customers. So now we are ready to learn the exercise. So let's start. First MCQ. Reading? Yes. So in which kind of account generally interest is not paid to the deposits? In saving account, interest is given. Recurring account, the interest is more as compared to saving. While in fixed deposit, interest is more as compared to saving and the recurring. So in which account the interest is not paid? Yes, the answer is current account. We have learned. Current account is an account which is opened by the businessman, where there is a limitless number of transactions of deposit as well as the withdrawal. So which account interest is not paid? Current account. Ready? Number 2. In which kind of account it is compulsory to deposit certain amount at a certain time? What they want to say, certain amount at a certain time. That is known as what? Recurring. Right, recurring means लगातार. We have to deposit a particular amount month wise. उसे हम कहते हैं. So which kind of deposit is compulsory to deposit certain amount at a certain time? That is a recurring account. Which account? Recurring account. In which kind of account the bank gives the maximum rate of interest on the deposit? तो सोचो किसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है? 4 अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. बोलो किसमें है? Yes, fixed deposit account. In fixed deposit, the amount is deposited for a fixed duration of time. 1 year, right, 2 years, उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं.
So bank can use that money for a particular period of time. That's why the rate of interest is more in fixed deposit account. Next one. What is the name of Central Bank of India? Central Bank of India का नाम बताओ. Central bank means the bank which has the total authority and the right to manage entire banking industry of India. तो बोलो कौन सा है? That is Reserve Bank of India. Which one? Reserve Bank of India has been given the name of Central, right? What is the facility for a certain period is called? हमने पढ़ा था ये. पे ऑर्डर मतलब जिससे एक बैंक दूसरे बैंक को पे. कैश क्रेडिट का मतलब होता है फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन. डिमांड ड्राफ्ट वी नो व्हेन अ सेंडर हैज टू गिव द मनी, राइट, ही विल गिव द अमाउंट एज वेल एज द कमीशन आल्सो. ओवरड्राफ्ट हम जानते हैं व्हेन अ पर्सन विड्रॉस मोर अमाउंट देन द बैलेंस, राइट, उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट. तो व्हाट इज द फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड? कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए देते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? कैश क्रेडिट. क्लियर? Sixth one. Which type of check is used by the bank to repay its debt? कौन सा चेक बैंक यूज करती है उसको अपना कर्जा चुकाने के लिए? Which one? ट्रैवलर्स चेक में क्या होता है? The person who travels to one country to another, if he require, he issues the travelers check. डिमांड ड्राफ्ट हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया. कैश क्रेडिट अभी पढ़ाया, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. So which type of check is used by the bank to repay its order? That is the pay order. Which facility of bank can be used against the risk of cash in traveling? Traveling मतलब कहीं बाहर जाना हो तो कौन सा रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा चीज लेके हम अवॉइड कर सकते हैं? That is a traveler's check. Traveler's check is the facility can be used against the risk of cash in traveling. That is the traveler's check. मिनिमम हाउ मच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस? कितना मिनिमम हम कर सकते हैं आरटीजीएस? तो याद है ना आपको रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर, तो मिनिमम कितना हम कर सकते हैं? याद है 2 lakhs. मिनिमम कितना करना पड़ेगा आरटीजीएस करना हो तो 2 lakhs. इन विच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक ट्रांजैक्ट एज पर बैचेस? हमने पढ़ा था एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. तो बैचेस 2 लाख हम भेज सकते हैं, कितना ही भेज सकते हैं, लेकिन बैच वाइज, एक साथ नहीं. सो इट कम्स टू बैच वाइज आए तो एनईएफटी. क्लियर? हाउ डू द बैंक ट्रांजैक्ट विद वन अनदर? एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? फंड मनी ऑकरिंग एट सर्टेन टाइम. बोलो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉल मनी. याद है हमने पढ़ा था interbank transaction. When one bank experience a faculty of fund, जरूरत पड़ती है, at that circumstances the bank will take the money with the other bank. याद आया? कॉल मनी. मिनिमम हाउ मच कैन बी ट्रांसफर्ड एनईएफटी? एक्चुअली ये मिनिमम नहीं है, यहाँ पे गलत हुआ है. अगर मिनिमम है तो एनईएफटी में बराबर सुनना, इफ इट इज मिनिमम एनईएफटी में एनी अमाउंट वी कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट, जितना भी हम ट्रांसफर करना हो कर सकते हैं. बट क्वेश्चन आई थिंक इट्स मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर एनईएफटी. टेक्स्ट के हिसाब से आंसर हुआ है 2 lakhs. तो कैसे याद रखना है? मिनिमम एनी अमाउंट, राइट, मैक्सिमम इट्स 2 lakhs. Which card is issued to the customer by the bank office? Credit. Which card is credit? उसके नाम के ऊपर उसको कौन सा कार्ड दिया जाता है? Which one friends? Yes, credit card. उसके नाम के ऊपर. Write the meaning of bank. अभी हमने पढ़ा था, बोलो मुझे. Give the meaning of bank. Bank is an institute which accepts the deposit with the intention to invest or lend with the condition of returning it immediately or whenever it is demanded. सही है? That is meaning of bank. Next. Which kind of account can be opened in the name of business unit? तो हमने पहला पढ़ा बैंक. Which kind of account can be opened in the name of business unit? Business unit के नाम पे आप क्या कर सकते हो? Business unit के नाम पे हम कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं?
we can open the current account. Which one friends? Current account. Business unit के नाम पे हम कौन सा account खोल सकते हैं? Current account. Clear? Next one. In which kind of account the number of transaction is limited up to a certain limit? कौन सा account में which kind of account लिखा है transaction is limited, transaction limited है बराबर, that is which one? Current account. Current account में ही हम transaction कर सकते हैं बराबर. Next one. How much amount can be transacted in cash through NEFT? कैश में आप कितना पैसा NEFT में दे सकते हो, राइट? याद है 50,000. 50,000 ऐसा अमाउंट है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं. Within how much time money is transferred through NEFT? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. How much time, कितना टाइम लगता है, राइट? Within 48 hours. Within 48 मतलब 2 दिन के अंदर कुछ भी करो NEFT हो जाएगा. In which kind of card only the amount available in the account can be spent? मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे आप कितना, ऐसा कौन सा कार्ड है जिसमें आप पैसा स्पेंड कर सकते हो? आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हो. बोलो विच काइंड ऑफ कार्ड? डेबिट कार्ड. कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड. ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? आंसर इन वन सेंटेंस में. गिव द मीनिंग ऑफ बैंक. कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बराबर. विच काइंड ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ बिजनेस यूनिट? कौन सा है? करंट. इन विच काइंड ऑफ अकाउंट द नंबर ऑफ विड्रॉवल्स ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड? ये भी सही है, करंट. हाउ मच अमाउंट कैन बी ट्रांजेक्टेड इन कैश? कितना? 50,000. विद इन हाउ मच टाइम मनी इज ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT? विद इन 48 hours. And which kind of card only the amount available in the account can be spent? That is a debit card. Question number 3, answer in short. Chalo, let's see. What is overdraft? Chalo, bolo, what is overdraft? When a current account holder, kya hai? When a current account holder withdraws more amount than the credit balance of his account, उसके अकाउंट्स के पैसे से ज़्यादा वो अगर विड्रॉ कर लेता है, when a current account holder withdraws more amount than its credit balance, then it is known as overdraft. बराबर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट किसे कहते हैं? ओवरड्राफ्ट का पता है ना? when the overdraft which is taken is for a specified period of time, अगर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो उसे कैश क्रेडिट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरड्राफ्ट. दूसरा भी एक है जो मैंने आपको पढ़ाया था, कैश क्रेडिट. In order to develop the business, the bank has given the facility that the businessman or contractors can keep their purchases bill and they can take the loan from the bank. That is known as also cash credit. उसको भी हम क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट. फिर हमने पढ़ा था डिफाइंड ट्रैवलर्स चेक. नाउ व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक? बोलो ट्रैवलर्स चेक. when today the traveling is become very important for a person. When any person goes from one country to other country, he requires the money. So in that case he can go to a bank, he can deposit the money and he can take the traveler's check. बराबर. Give 2 examples of non financial transaction. अब ये क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है डिपॉजिट और विड्रॉवल और लोन के अलावा, जैसे कि इश्यू ऑफ न्यू पासबुक, इश्यू ऑफ स्टेटमेंट, चेंज ऑफ पिन का, मतलब जो भी बैंक के अलावा हम जो करते हैं, राइट, नॉन फाइनेंशियल कहते हैं उसको. देन कम्स द टॉपिक एक्सप्लेन क्रेडिट कार्ड. नाउ व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? पता है? Credit card is a card which is issued by the bank, right, after seeing the credit worthiness of the party.
in which a person, account holder, or any person can apply to the bank for the issue of credit card. The bank will examine the financial condition of the person thoroughly, and then bank will issue the credit card as per the limit wise. Yeah, the limit सब होता है इसमें. Debit card. Debit card is a card which can be used for the shopping purposes and in which the amount can be spent from the available balances. Credit card में the amount is given by the bank and amount to be repaid within a specified period of time. ATM, ATM का full form. ATM means automatic teller machine, right? Which gives the in which the person can withdraw the money, and he can do various functions like he can take the 5 statements, 5 last transaction statement. He can change the pin. He can know the balances, right? So ATM card gives such type of facilities. Then comes the short questions in brief. So let's see. That is the short notes. First is the call money. Do you remembering what is call money? Call money means the fourth function. When one bank experiences the paucity of funds, that is the scarcity of funds, in that case, the bank will ask to the one bank will ask to the another bank. No, it's not like that. One bank asks to the agency. Agency is appointed. An agency will do this work, right? And as per the demand and supply, the interest rate is fixed. That is known as call money rate. That is known as call money rate. Clear? Then comes core banking. Now, what is core banking? That also we have learned. Core banking, the main functions of the bank, that is the core function. Now, what is core banking? Remembering this one. This we have all highlighted everything so that you can easily learn. This one, core banking, centralized online real-time exchange, most important one. Centralized online, this one. All branches are connected to one bank. The customer can go to any account, right? Lot of things are there. बराबर, तो ये सब इसके अंदर आता है. तो क्या लिखा है वापस एक बार रीड कर लेते हैं. In this system, all the branches of the same bank located in different parts of the world are connected to one another in the centralized server of the bank. All the details of all the account of all the branches of the banks are available. Entry of the transaction of an account holder of a bank is recorded in the centralized server of a bank in real time. The change in entry occurring in this centralized server can be seen in all the branches of the bank. The account holder of any branch can complete his transaction from any another branch of this bank. He can withdraw or deposit the money or can do any transaction in his account from any other branch. Thus, the account holder becomes the customer of the bank and not on a particular branch. This process can be done in different branches of the same bank and not of the particular branch. This process can be done in different branches of the same bank. Because of this arrangement, time and expense of both the banks and the customers are decreased. सही है? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कोर बैंकिंग के बारे में. Now let's see the next question. RTGS, remembering RTGS, real time gross settlement. Minimum 2 lakhs can be spent. वो वाला है. चलो एक बार वो भी रिवाइज करके आते हैं. Here comes the RTGS. देखो, IFSC code and all. When an RT, इसका definition भी आपको याद है, बहुत simple है. When an RTGS member bank transfers the money to any other RTGS member bank anywhere in India, in this method it is called RTGS. बराबर?
ईच ऑफ द आरटीजीएस मेंबर बैंक इज आइडेंटिफाइड थ्रू, कैसे पता चलेगा, थ्रू आईएफएससी कोड, बराबर। और कितने डिजिट्स के होते हैं, 11 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और किसने बनाया ये, IRDPT, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इसमें लिमिट 2 लाख है, मिनिमम कितने आपको स्पेंड करने पड़ते हैं, 2 लाख ट्रांसफर करने के लिए। आफ्टर दैट ऑब्वियसली एनईएफटी, उसके बाद जो आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट। सेम है, सब कुछ सेम है। व्हेन एन एनईएफटी मेंबर बैंक transfers the money to any other NEFT member bank, it is known as NEFT. उसमें भी वही, how can we know, IFSC code, no limit of minimum, देखो क्लियर लिखा है, देखो MCQ we have learned उसमें गलत हो गया था, right? No limit on minimum, maximum 2 lakhs can be transferred, वो भी याद है बैचेस में होता है, ये भी क्लियर है। The main thing is that if you read this, you get understand what you want to write. And the main thing is that you prepare the notes of this. Otherwise, it becomes very, very confusing because lot of new concepts are there, lot of new things are there. RTGS, NEFT, IFSC, loan, e-banking, core function, subsidiary function. So a lot of things are there. So if you read this chapter, that's why I have taken so much strain to explain this chapter, each and everything. Just see, it takes so much time to revolve also from one page to another because a lot of things are there. MCQ we have done. One sentence we have completed. Short answers we have seen. NEFT that we have done. Now comes M-banking. The name itself says mobile banking. With the help of internet and a device, that is known as what? Mobile banking, right? So what we can say, the deposits we cannot do and withdrawals we can do with the help of mobile bank. Now comes the one statement they are asking to say. Which statement? The account holder is not a customer of a particular branch of a bank, but of the bank. Have you seen this statement anywhere? Just revise it. Yes, it is in the core banking. What they want to say, the customer can deposit his money in any bank. Customer can withdraw from any bank. That's why they want to say account holder is not the customer of a particular branch, but of the whole bank. That means that time I explained to you, in State Bank of India, I can deposit in here also, while I can deposit in my native place also. I can withdraw from here also. That means I can do any transaction anywhere in India, but the condition, we should have an account in that particular bank, not branch, in that particular bank, right? That is, account holder is not a customer of a particular branch. Account holder is not a customer of a particular branch of a bank, but of the bank. ये अच्छी तरीके से आपको करना है. Then comes the statement in detail. Functions of bank compulsory exam में आएगा. याद है, explain the functions of bank. Two functions are there. दो functions है इसमें, याद है. One is known as the core function and second is subsidiary function. बहुत बड़ा है. Core function में हमने देखा था to accept the deposit, to lend function, to investment function, to do interbank transaction. Subsidiary में हमने देखा to look after the transaction of a financial customer, to issue the letter of credit, draft service, import export and lot of things. और भी बहुत सारी चीजें. Explain the types of bank account. याद है types of bank account? Types of bank account, 4 account की बात कर रहे हैं लोग. Saving account, current account, recurring deposit account and fixed term account, fixed deposit account. So पूरी चीज हो चुकी है.
बट द ओनली थिंग दैट इज द रिविजन। अब जरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। आरबीआई बोलो, आरबीआई का फुल फॉर्म इज वेरी सिंपल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सही है। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो आपको सब कुछ कहता है। केवाईसी, नो यूर कस्टमर, आज इसके बगैर काम होगा नहीं, विदाउट केवाईसी कहीं पे भी काम नहीं चलेगा। डीमैट, डीमेटलाइज्ड, फिजिकल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट कॉपीज। शेयर खरीदेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, जो भी आप खरीदोगे ये डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब एक अकाउंट ऐसा जिसमें कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आता, सॉफ्ट कॉपी में आता है, इसे कहते हैं डीमेटलाइज्ड। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद है मिनिमम कितना, 2 लाख। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में याद है मिनिमम कोई अमाउंट नहीं, लेकिन मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम 2 लाख, वो भी बैच वाइज। आईएफएससी क्या है ये, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, हर बैंक का अलग अलग कोड होता है। डीएनएस, डिफरेंट नेट सेटलमेंट, राइट, 15-15 मिनट में होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, मतलब पूरा एवरी बैंक इज कनेक्टेड टू दिस, उसी के अंदर अपने कोर बैंकिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। ईच एंड एवरी बैंक इज कनेक्टेड टू वन अनदर, एनी कस्टमर कैन डिपॉजिट इन वन अकाउंट, ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, सब कुछ। पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। IRDBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, राइट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती है। तो ये देखती है कि अपना बैंकिंग सिस्टम को और कितना हम सेफ बनाए और अच्छी तरीके से कैसे काम करें और कस्टमर्स को किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। So friends, this is a big chapter that we have completed. हर एक चीज, everything has been explained very minutely, very clearly. The only thing is that you have to see these videos again and again, so you get the concept very well. So from next batch, we are going to start with the new chapter, that is the कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। बहुत बढ़िया चैप्टर है। हाउ टू कम्युनिकेट, है ना, उसके बगैर तो बिजनेस चलेगा भी नहीं। हाउ टू कम्युनिकेट, ई कॉमर्स, आज देखो बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंड आज से सिचुएशन कोविड का है तो देखो जितना हो सके लोग अपने घर से बिना निकले ही सब काम करने चाहते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। और आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में जब अपने से कोई काम नहीं होता है तो हम और किसी को सौंप देते हैं, राइट, जिससे कि कॉस्ट भी कम हो जाता है और अपना टाइम भी सेव हो जाता है। तो वो सब हम इसमें सीखेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड द 3rd चैप्टर। इसके नोट्स बनाने हैं, भेजने नहीं है आपको, आपके पास ही रखने हैं। 4th चैप्टर हो सके तो 2 पेज रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच लिसनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।